हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मॉन्टेजिया फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। मॉन्टेजिया फ्रैक्चर इज द फ्रैक्चर एट द अपर वन थर्ड ऑफ द अल्ना विद डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ रेडियस। तो मॉन्टेजिया फ्रैक्चर में क्या होता है? मॉन्टेजिया फ्रैक्चर में जो अपर वन थर्ड ऑफ अल्ना बोन है वो फ्रैक्चर होता है और जो रेडियस का हेड है वो डिसलोकेट होता है। तो रेडियस का हेड डिसलोकेट होगा और अल्ना अपर वन थर्ड पर फ्रैक्चर होगा। इस टाइप के फ्रैक्चर को हम बोलते हैं मॉन्टेजिया फ्रैक्चर। इट इज कॉज्ड बाय अ फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड. It may also result from a direct blow on the back of upper forearm. This type of fracture is categorized into two types depending upon the angulation of ulna. First is the extension type and second is the flexion type. जो extension type है that is more common type in which ulna fracture angulates anteriorly, extends and radial head dislocates anteriorly. मतलब एक्सटेंशन टाइप में क्या हुआ? अल्ना फ्रैक्चर एंटीरियरली एंगुलेट करता है और रेडियल हेड डिसलोकेट्स एंटीरियरली. वेयर एज इन फ्लेक्शन टाइप अल्नर फ्रैक्चर एंगुलेट्स पोस्टीरियरली, फ्लेक्सिस एंड द रेडियो हेड डिसलोकेट्स पोस्टीरियरली. डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे? एक्सरे ऑफ फोर आर्म लेंगे. इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू एंड लैटरल व्यू कैन शो द मोंटेजियस या fracture clearly. In case of isolated fracture of ulna in its upper half and dislocation of head of radius can be clearly seen in the x-ray. So you can see here the x-ray. Here is the fracture of ulna in upper one third and the dislocation of the radial head. Now talking about the treatment. This is very unstable joint and frequently redisplacing even if it has been reduced once. So first reduction is done under anesthesia. If reduction is successfully, a close watch is kept by weekly check X-ray for initial 3 to 4 weeks. In case the reduction is not possible or if redisplacement occurs, an open reduction and internal fixation using a plate is performed and the radial head automatically falls into position once the ulnar fracture is reduced. Talking about the complication, malunion is the most common complication if in case treated conservatively, because an undetected redisplacement within the plaster can lead to a malunion of the bone. It causes, because of the malunion, it may cause the deformity of the forearm, resulting in the limitation of elbow and forearm movement. So this all about the Monteggia fracture. Thanks for watching.